और दीटा पॉइंट हम लास्ट पॉइंट अकाउंट development is a product of both maturation and learning. Copy good. The two point Z. The data point में तीन point. Development is the product of both maturation and learning. How do you heading there? The maturation टा लिखी जो ये उड़ा लिखी दे जैसे next point. Sorry. Next point लिखो. The social expectation for each stage of development. The social expectation. The social expectation for each state of development. First one, like every stage of development is characterized by its own prominent characters. Next point. When passing each stage, the child shows more mature forms. The child shows more mature form of behavior, mature forms of behavior, as well as understand his approved pattern of societal behavior. The foundation learning, next point, the foundation learning starts from 6 years. The foundational training starts from 6 years, where parental training plays the most powerful role in helping children to behave in socially in appropriate ways. Our society, next point, our society expects specific pattern of behavior from children and
adolescents, adolescents that is appropriate of their age group. If there is any deviation, they are also cousined CAUTIONED to stick there. তারপরে next point. Next point, early foundation of development are more critical than later period of life. X triple এটা লিখুন না পয়েন্টটা early foundation of development লেখো early foundations of development are more critical than later period of life. দেখে নাও developmental psychology have developmental psychologists have observed that the impacts of appropriate environmental stimulation is optimal on specific kinds of behavior during certain phases of development. Desire effects না করবেন
desired effects can be produced more readily decorating that period more readily decorating this time schedule is called this time schedule is called critical period or sensitive period for their development. Next one, according to White, the foundation, according to White, the foundation laid during the first 2 years, laid during the first 2 years, laid during the first 2 years of life are the most critical, are the most critical. Babyhood is the period. Next one. Babyhood is the period to learn general attitudes of trust, or mistrust, depending on how the parents satisfy their child's need for love, care, attention, and food. Stages of development. Okay. Development, as the term indicate, implies qualitative changes in behavior and ability. Okay. Amara development jura kuajiba amara qualitative changes habo jemti ki amara behavior, thinking process ei sabu changes ko ame kahiba development. Each individual passes through a succession of development stages that are common to all. तो सब मनुष्यर गोटे
कॉमन स्टेजेस थाए हमर बेबीहुड अछि चाइल्डहुड अछि एडोलेसेंस पीरियड अछि तो all culture divide the lifespan into the different period or stages तो प्रत्येक स्टेजेस रे हमर बिहेवियर चेंज हवा दरकार तो चाइल्डहुड रे हमें जहाँ सहित जमती व्यवहार करथुलु ता हमर एडोलेसेंस बा बेबीहुड रे गोटे ताई हमें समस्त सहित मिसी थाउ चाइल्डहुड रे भी मिसी थाउ एडोलेसेंस रे सेरा कमी थाए तापर जते बडे हमें ओल्डर एज को जीवा से समय हमें रेस्पेक्टेबल वे रे हमें कथा बार्ता हो बुझी होची तो प्रत्येक पीरियड ऑफ टाइम रे कोन हुए ना मनुष्यर बिहेवियर टा चेंज हुए आ जदि हमें सही समय से बिहेवियर टा न करिवा ताले हमें सोसाइटी रे रही परिबे तो सोसाइटी जेंते हमें पूर्वरु पड़ले सोसाइटी भी हमर प्रत्येक मनुष्यर बिहेवियर रो किछि एक्सपेक्टेशन करू बुझी होची all the culture divide the lifespan into the different period of stages regardless how long or short the total lifespan. It is generally subdivided into some stages or period. Each stage is characterized by the certain behavioral and developmental characteristics. Failure at any particular stage adversely affect the later stage. जदि आमे छोट पिलांको माने छुआ बेले संस्कार सिखा जाए जे आंको मुंडिया मारिबो आंको नमस्कार करिवो ठाकुर पूजा करिवो तो एई जिंस संस्कार देले तांको लेटर स्टेज रे सेटा इफेक्ट करे जदि आमे से जिंसटा सिखेबानी धर से हठात उपरे कोनोसी जिंस तार गोटे उठे देला हम कहबे नै नै एटा जिंस न चोरी कौन चोरी माने तो पिला जानती ना से जिंसटा उठे दे तो आमे जदि कहबे एटा चोरी कहंती आको कहिले तुमे जेल को जीवो ताहाले से जिंसटा आउ से करिवो दैट इज ए अवेयरनेस सोसाइटी रा हमर जेंति रही जेंति देखो आमे बिहेव टू एनी अपोजिट सेक्स माने आमे जते बळे स्कूलिंग रे पढुचे पर आमे जते थर्ड टू फोर्थ स्टैंडर्ड रे पढुचे को जे मिस जने कि जते आमे फिफ्थ और सिक्स्थ क्लास रे ताको लर्निंग सब दिया जाय what is learning दिया जाय व्हाट इज अ बैड टच एंड व्हाट इज गुड टच छोटो छुआ को लर्निंग दिया जाय तादे से माने जानते जे मु को वे रे मु रिएक्ट करिवि कोनोसी जगह बुझी होची सो एगुडा सब शिक्षा द्वारा कोन हुए ना हमर प्रत्येक स्टेजेस रे डेवलपमेंट तो एई जिंसटा डेवलपमेंट हेले जाय कि हमें अर्लियर जतला हमें लैटर स्टेज को आसीबा बा हमें एडोलेसेंस पीरियड को आसीबा से समय हमको कोनोसी जिंस इफेक्ट करिवो आ जदि हमें से जिंसटा रे अवेयरनेस नथिबा हम किछि इफेक्ट करिवो जोटा कि हमर लाइफ रिस्क भी रहिछि तबरा हुए तो जणे गोटे एंगल ले तुमको देखि परिबो हां पिला सब सब संग मिसिया ए पिलाटा मिसाणी बट कि कहबो ना एटा बल प्लान माने ओवर स्मार्ट होछि कि अति उछुल बुझे जोड़िया भाषा ये सब हम कहबा किंतु तो प्रत्येक स्टेजेस रे बा प्रत्येक जगह रे हम को प्रकार बिहेवियर हम सब करा जीवो तो सब जगह रे हमको सिखा जाय वेदर द लाइफ स्पैन इज शॉर्ट माने प्रत्येक मनुष्यर लाइफ स्पैन आम जानी जे गोटे लोक केते वर्ष बंचिबो से कहबो मु तो अल्प वर्ष बंचिबि मु काहे पीरियड मु आगु आगु सब काम करी तो ता माने नुहे जे हमर जो रूल्स हिसाब रे हमर जो जेमते कि हमर डिफाइन करा जाय जे हमर मैरिज टाइम हमर होची 21 अगर 18 थिबा वे 21 हो जे माने मु तो 35 वर्ष की 40 वर्ष बंचिबि आउट इज शीघ्र बाई ना ताको भविष्यवाणी हो तो इट इज नॉट फैक्ट बुझी होची कारण हमको से स्टेज देखि जीवार अछि तमे वेदर तमे 80 वर्ष बंच किमा 40 वर्ष बंच ताले सोसाइटी रे सेटा को रूल्स बोली कोआ आ से रूल्स बिएंड रे जो माने जानते कंपनी सुन बुझला failure at any particular stage adversely affect the later stage unless the problem are solved in time. It may be lead to the poor adjustment, immature behavior, and other related problems. Each stage of the development is very crucial, keeping in view psychological changes it brings with. Hence, it is very important to understand the developmental characteristics of each stage. तो प्रत्येक स्टेजेस रे हमरो कोन कोन डेवलपमेंट होबा दरकार सेटा को भी हमें केयरफुली ऑब्जर्व करिवा दरकार prenatal stage होची from conception to death to birth and period of infancy birth रो 2 week जोटे खाली वैक्सीन जो पड़ो पोलियो खायो period of baby from 3 weeks to 2 years period of childhood आसीबो early childhood हमर आसीबो 2 years to 6 years late childhood आसीबो 6 years to 12 year period of adolescence from 12 year to 22 तो 10 years सेठी रहइबो period of adulthood 22 year रो 60 year रहइबो early adulthood 22 years to 30 years जो माने ए सब एडा होची क्रुशियल पीरियड हमर कैरियर अचीवमेंट बुझी होची लाइफ अचीवमेंट ए सब हम करू मिडिल adulthood
30 years to 55 years family ପାଇଁ ଭାବିବା के निजर एस्टाब्लिशमेंट हवा लेट एडल्टहुड 55 years to 60 years ओल्ड एज हेले 60 years to 20 एटा होची स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आवर लाइफ बुझिला एटा सब आदर शॉर्ट क्वेश्चन सब आसीबो ए टेबल टा तुमको मन रखिया पड़िबो बुझिला देखो प्रथम स्टेजेस हमें आसीबा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बाप रे गोटा को से नहीं कितने बड़ा दी स्टेजेस रो किछि लंग क्वेश्चन अछि कि देखि दो सेम से all stages रो गोटे ब्राइट डिस्कशन दो पड़छ एटा गोटे लंग क्वेश्चन अछि अच्छा सियो prenatal stage thus period starts from the moment of conception and continue to about approximate 280 days or 40 weeks. Human life begins with the union of a male sex cell and female sex cell. Conception takes place when the female sex cell ovum is fertilized by the male sex. This period is characterized by the period of rapid growth and that to much extent that when infant is born, there is approximate 2 billions of cells in his body. The size of also increases from the size. Smaller the head of the upland to size the approximate 18 to 20 inches long. How these stages progress is to great importance. देखो जिते बड़े छोटो छुआटा जिते कंसेप्शन हुए तारा टोटल जो लेंथ हमर आसी थे दैट इज 18 इंच तो 20 इंचेस वगैरह रही छोटिया गुडी रही बुझे होची तो how this stage progress is a great importance to all of us. This period is characterized by 6 major factors, each of which exerts quite strong impact upon the development of fetus. These include the following. तो आर डेवलपमेंट हवा दरकार तो बेले बेले कोन हुए ना जतरे कंसेप्शन पर कोन हुए मिसकैरेज हे जेबी दैट मींस से समय कोन हुए ना हमर फूडिंग को से माने ध्यान दियंतिनी एक्स्ट्रा वर्क करंती किंतु एबे कोन होची तमे प्राय देखिबो जमने लॉ ए सब पडतते स्मोकिंग अल्कोहलिक ए सब बिहेवियर जो रहउची सेरा ऑटोमेटिक लैटर स्टेज रे इफेक्ट करे जो मेंटल डेवलपमेंट हुए छुआ तापर होची कोन विभिन्न प्रकार रोग माने बर्न कैंसर भी गोटे रोग आस बुझे जदि जन्म होची से कैंसर हेगी ही जन्म हेगी आस बुझे माने इफेक्ट पड़ानी निज बॉडी ऊपर इफेक्ट पड़े बेबी बॉडी तो ये सब जिंस सब आसे the mechanism of hereditary transmission or hereditary endowment act the foundation of later growth and development of fetus. This effect is fixed and no force external and internal changes. तो प्रथमे से जो स्टेजेस है फर्स्ट स्टेजेस रे कोन हुए ना हेरिडिटरी बिहेवियर माने जो पेरेंटल बिहेवियर सब थिबो से सब ऑब्जर्व करी हमें कोन ये आ फेस बळे हैची आ गुणटा बापा जेजे बापा गुण आनिची तो ए गुणटा ई जगह रे आसे the pregnant of mother mental and physical condition play a very significant role in fostering as well as arresting the growth and development of fetus. तापर रहला गोटे होची while pregnancy the mother will be prepared ଆଉ ସେ mentally prepare ହେଇକି ଥିବ ଯେ I will born a baby ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବେବିଟା ଜନ୍ମ ହବ ସେଟା ଗୁड हेल्थ रे ଜନ୍ମ ନହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇକି ସବୁ ଜନ୍ମ बुझे होची মানে মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট हुएनी মানে গଧ পিলা এই सब कोनी ने से माने किछि किछि जेमति कि हमर कोन कथिले ना हम पुराना काल रे अभिमन्यु थिले से पेटर थाय कि सब जिंस सिखिते बुझे तो ए जगह रे सेमति भी डेवलपमेंट हुए the sex of new life is fixed at the time of conception and it is not affected by the mother physical and mental conditions गोटे सेक्स डिटरमिनेशन करिवा मेल हबो कि फीमेल हबो आगो सब
स्कानर पकई सब देखुଥିଲେ बुझी होची तो एटा सब एबे बंद हे जाउ से जिंसटा कोन होची ना जेतले कंसेप्शन हुए से ऑलरेडी से समय डिसाइड हे जाता से पुकी जियो तो लैटर स्टेज की मेंटल स्टेज तो पुराना पुराना सब प्रथा सब अछि बुझी होची की कहबो जो कोन जो श्रीकृष्ण पर रखिले पुआ ये सब जिंस सब ट्रेडिशनल सब अछि बुझी होची ତ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ତମେ ଏତିକିଟା ନଡିଆ ବାଡେଇଲେ ଓକେ ତ ଏଇ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉ ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ଲୋକମାନେ ପୁଅ 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 ପାଇବା ଭିତରେ ଝିଅ 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 ଚାଲୁ ବୁଝି ହଉଛି ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ମାନେ କମି ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ ଆମର ବଢିଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଓକେ whether it is girls or it is a boy ମାନେ ଇକ୍ୱାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଏଜୁକେସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ଜିନିଷଟା ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେକ୍ସ ଡିଟରମିନେସନ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ କନସେପସନ ସେଟା ଡିସାଇଡ୍ ହଉଛି growth of the fetus is very systematic and rapid during the prenatal stage in comparison to the any other stage of development of the human child. The prenatal stage जोटा कि हमरा 280 days पर्यंत रहउची बा 40 weeks पर्यंत रहउची से समय ता ग्रोथ ता अधिक बेबीटा से समय बेसी डेवलप करे. The entire prenatal period is considered to be very important from the point of view providing very safe and favorable environment to fetus. This period is full unexpected hazard which need extra care and concern. तो ए समय कौन हुए ना जेतेबेले कंसेप्शन हुए से समय 280 डेज पर्यंत माने जेमति कोन दरे से समय चमकी बनी ब्लड प्रेशर ठीक रहिवा दरकार नले डैमेज होबार संभावना रही हॉरर मूवी देखिबनी बुझिला ए सब जिनस गुडा सब कुआ जाय जे एमति देखले कि मैं डरी गले त एटा नष्ट होबार संभावना थाए आ 280 डेज ता होची बहुत क्रुशियल तो कंसेप्शन हेता किंतु बेबी बन हेता बेबी नष्ट होय attitude of the parents, especially that the mother towards her pregnancy is very important in determining not only mental health of the mother, but also deciding the mental health of the fetus in later year. Research investigation has already proved this. Okay, तो ये जो attitude of the parent जो झगड़ा होती है बुझी होची कली करथिबे कली एनवायरनमेंट रे रहउथिबे से ऑटोमेटिक तापर मां सब डिप्रेस रे रहउथिबे आ चिंतित थिबो धर छुआटा जन्म हबो से केमती बड़ा हबो हाँ केमती खाइबो देबे पर पैसा नहीं ओके तो यही सब सिचुएशन जदी मेंटल स्ट्रेस रहिबो सेरा ऑटोमेटिक चाइल्ड ये भी स्ट्रेस रे आस आ सेरा लैटर ता लाइफ रे सेरा इंपैक्ट तो एई गोटा होची कोन हमर गुड कंडीशन जे मेंटल हेल्थ जदी मदर रे गुड रहउची त ऑटोमेटिक चाइल्ड ता भी गुड हेगी भारिबो एंड स्मार्ट हेगी भारी all these characteristics of prenatal stage makes it more complicated and important because of this the expected mother is required to careful in each and every step of her life as she has to shoulder the prime responsibility of rearing up her baby in her womb. So এইটা যেତେବେଳେ ରୁହେ এটা হচ্ছে ସବୁଠାରୁ crucial period of women life and is taking care of the both life ମାନେ ନିଜର life as well as the child life କୁ ସେ caring अच्छा याको ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି କରିକି ଦଉଛି ହେଲା ନା ଆଦରୁ କିଛି କରିକି ଦବ ଏଟା ଗୋଟେ 3 ମାର୍କସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଡାକୁଛି what is prenatal stage describe about prenatal stage describe about factors of prenatal stage describe about factors of prenatal stage এটা লিখিবা first point
The mechanism of hereditary transmission, the mechanism of hereditary, Hereditary, or the Hereditary Endowment Act, or the Hereditary Endowment Act as the foundation for the later growth and development of the fetus. Next point. The pregnant mother's mental and physical condition. The pregnant mother's mental and physical condition play very significant role in arresting the growth and development of the fetus. In arresting the growth and development of the fetus. Next point. The sex of new life the sex of new life is fixed. The sex of new life is fixed at the time of conception which is not affected by which is not affected by mother's physical or mental condition. Next point. Growth of fetus is very systematic and rapid. Growth of fetus is very systematic and rapid during the prenatal stage. Next point. The entire prenatal period is considered the entire prenatal period is considered to be very important from the point of view from the point of view of providing a very favorable environment to the fetus.
Next one, attitude of parents especially that a mother towards her pregnancy is very important. Pregnancy is very important in determining not only the mental health of mother but also deciding the mental health of the fetus in later years. है ना एटा थला 3 मार्क्स होला 3 मार्क्स रे एटा क्वेश्चन आसी तापर आसीबा हाउ द कंसेप्शन occurs. Conception mark the beginning of the human life. A new life begins the union of male sex cell and female sex cell. These sex cells are developed in the reproductive organs, and the gonads, spermatozoa are produced in the male gonads. The testes, while female sex cell, the ovum, are produced in the female gonads and ovaries. There are many similarities as well as differences where the male and female sex cell, they are similar in this sense that contain chromosomes. There are 23 chromosomes in mature sex cell, and each chromosome contains the genes. Each are true carrier of hereditary. There are approximate 3,000 genes in each chromosome. They are passed one from the parent to the offspring. But what is the difference between male and female sex cell? There are two main difference. The first place, there are 23 matched chromosomes in the mature ovum, while 22 matched chromosome on unmatched chromosome. In the mature chromosome, which may be either X or Y, the second important difference them is related to the number of preparatory stages and development they usually pass through, behave there readily a new life. देखो ଯେତେବେଳେ କନସେପସନ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ 23 କ୍ରୋମୋଜୋମ ସେମିତି ରହିବ ଆଉ 23 କ୍ରୋମୋଜୋମ ରେ 3000 ଜିନ୍ସ ରହିବ ତ ଆ ଭିତରେ କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ ଫେଟସ୍ ମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ଫେଟସ୍ କିମ୍ବା ଦିଟା ଫେଟସ୍ ଡେଭଲପ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୱିନ୍ସ ହବ ଦିଟା ଫେଟସ୍ ଡେଭଲପ ହବ ତ ସେ ସମୟରେ କଣ ହବ ନା ଅଲଗା ଯୋଉ କ୍ରୋମୋଜୋମ ୱିକ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡାକ ସବୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯିବ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଯିଏ ରହିବ ସେଟା ଡେଭଲପ କରିବ ଆଉ ସବୁ କ୍ରୋମୋଜୋମ କଣ କରେ 3000 ଜିନ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମର ହେରିଡିଟାରୀ ମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଗୁଣ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ଗୁଣ ସବୁ ତା ଭିତରେ ରହିବ ବୁଝି ହଉଛି ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଅଫ ନେଚର ମାନେ କହିବା ଆମେ ଯାହାର ଗୁଣ ସବୁ ରହୁଛି ବୁଝି ହଉଛି ମାନେ ଆ ଥ୍ରୁ ହିଁ ଡେଭଲପ ମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ କଣ କେମିତି ତା ଗୁଣ ରହିବ ତା ଭିତରେ ଡେଭଲପ ଏବେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି କରୁଛନ୍ତି ଓକେ ସେ ଆ ନାକ କେମିତି ହବ ପୁରା ଆଗ ଯେମିତି 3D ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଯେମିତି ଡିଜାଇନ ହଉଛି ସେଗୁଡା ଡିଜାଇନ କରୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି ବାହାରୁ ଓକେ ତ ଏଇ ସମୟ କଣ ହୁଏ ଦେଖ 23 ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ ର ମ୍ୟାଚ୍ ଆସିବ ଆଉ 22 ଅନମ୍ୟାଚ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ ରହିବ okay the second important difference between them is to relation to the number of preparatory stages of development they usually pass through before they are ready to produce a new life. Of course, it is true that all the sex cells must pass through the preliminary stages of development, but while male sex pass through the two preparatory stages. Preliminary stages, female kara gote rahibo, male kara dita rahibo. Maturation and fertilization. Female sex usually pass through the three preparatory stages like maturation,
ovulation, and fertilization. Maturation refers to the process of chromosome reduction through the cell division. Division of chromosome is a matter of chance. There are approximate 16 lakhs 777,266 possible combination of 23 chromosome from the male and 23 from the female sex. तो केते क्रोमोसोम सब रहता है प्रति क्रोमोसोम मैचिंग हेले जाके तंगर ओवल्यूशन स्टार्ट हो फीमेल को तीनटा पास करिवो मैच्योरेशन रे आसीबो डेवलप होबो फर्टिलाइजेशन होबो एंड ओवल्यूशन होबो मेल सेक्स रे होबो मैच्योरेशन एंड फर्टिलाइजेशन ओके केवल आ भीतर कहबो ओवल्यूशन ता गोटे एक्स्ट्रा प्रोसेस रहिछि फीमेल सेक्स जो सेक्स रे ovulation is the process of preparation to create the way of new life बुझला फर्टिलाइज हला परे ओवल्यूशन प्रोसेस होछि न्यू लाइफ टाको बॉर्न दब से समय अन्य जो उडाक सब वीकर क्रोमोसोम थिबे से माने डिस्ट्रॉय research finding has also indicate the fact the two ovaries alternate in producing mature ovum during each menstruational cycle about 28 days. Ovulation usually occurs in the 11th day of menstruational cycle. However, it may vary from 5th day to 23rd day approximately. Once the mature ovum enters into the fallopian tube, it moves down towards the uterus. Under the normal circumstance, the ovum usually takes to 2 to 7 days to move to the fallopian tube in the uterus. In the case of non-identical multiple birth, 2 or more mature ovum are released from the ovaries. So, our twins baby baby huanti तो दीटा ओवर रे तकर फर्टिलाइज हुए जो सिंगल रहइबो गोटे क्रोमोसोम सेठी फर्टिलाइज हबो आ 2 to 7 days से माने टाइम नियंती फर्टिलाइज हबा तापरे कोन हुए ना प्रेगनेंसी हुए कि नहीं जना पड़े fertilization is the third stage of development fertilization takes place when the ovum is in the fallopian tube it is usually believed that fertilization occurs 12 to 36 hours and usually within the 24 hours after the ovum enter the tube. After the spermatozoa has penetrated the ovum, the surface of the ovum changes in such a way that no other spermatozoa can enter. After the sperm cell penetrate the wall of the ovum, the nuclei from the two cells are connected to each other and are merged a new life, thus receive the 46 chromosome or 23 pairs. So 23 pairs ta receive hela pare automatic ovum ta close hob. Aw se samare fertilization amara start. Okay. On the half of the female cell and other half from the male cell. This is how the conception occurs in the live life form. बुझला तो ऑटोमेटिक को हुए ना ओव्यूम हमरा 23 क्रोमोसोम एक्सेप्ट हला परे ऑटोमेटिक क्लोज हुए आ से समय रे हमरा फर्टिलाइजेशन गोटे न्यू फेटल स्टार्ट हो the stages of penile development the total duration of the penile development is approximate 280 days 280 दिन भितर बा 44 वीक्स रे हमें जानिबा जे से पिलाटा डेवलप हला कि नहीं बा बड़ा हला कि नहीं the period of ovum germinal period or zygote এটা হচ্ছে সেকেন্ড উইক রে অকার হবে যে সময় জার্মিনেশন স্টার্ট হবে বা ডেভেলপ হবে the period of embryo the second week and end of the lunar month embryo মানে সেই সময় তার embryo form হবে end of the second lunar month to the birth period of fetus ছোট ছুয়া যেতলে থেকি গোটে বেবি ভলিয়া গোটে রূপ ধারণ করিব সেটা হচ্ছে fetus period বলি কয় বুঝলা ফার্স্ট স্টেজ হচ্ছে ওভিয়ম তারপরে এমব্রিও রে ওভিয়ম র जो টিকে ডেভেলপ হবে এমব্রিওটা মানে সুতা ভলিয়া এমতি কি ডেভেলপ আসিব তারপরে এটি টিকে স্ট্রাকচার ধরিব মানে হাত গোড় ভলিয়া টিকে নেব স্ট্রাকচার ধরিব বেঙ্গ যেন দেখতো বেঙ্গ ফুলা যেমতি সব পড়ে বেঙ্গ হইকি তারপরে লাঞ্জ ছেড়িব আস্তে আস্তে বুঝি ओके तो नेक्स्ट क्लास रे हमें पढ़िबा पीरियड ऑफ ओव्यूम एंड एम्ब्रियो এই পার্টটা জানো তোমার বায়োলজিক্যাল আছে আচ্ছা এই নোট গুড়া সব উঠিয়ে দাও হলা এটা 3 মার্কস 2 মার্কস রা ডাকুছি তারপরে
ଟୋଟାଲ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ ଡାକିଦେବି ଗୋଟେ ଅଛି ତାପରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆ ଭିତରେ ତୁମର ଯେତିକି ଅଛି ଏଇଟା ଏନଫ୍ ହବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଯାହା ଯାହା ରହିବ ଦେଖିବା ଯଦି ଆ ଭିତରେ କିଛି ଛାଡି ଯାଉଛି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ଡାକିଦେବି